Okay, so good morning everybody and welcome to the pharmacognosy class, and in this lecture we are going to study about menthol, and we have already discussed this topic little bit. So going back to the revision, we'll be starting with the brief introduction about menthol. So menthol, uh, as you know, it is a cyclic monoterpene alcohol which is found as a major constituent in the essential oils of mentha species, and it has a distinct smell, flavor of plant, and major essential constituent is menthol, which is very aromatic, and it has a very biological properties as well. And extraction of mentha arvensis gives essential oil, and which can be used as your like your aromatherapy, as an antiseptic and counter irritant. Almost 80% menthol extracted from hydrodistillation method, and apart from this you can extract menthol from by steam distillation, microwave extraction, a supercritical fluid extraction method as well. Isolation menthol from essential oil can be done by various methods such as fractional distillation, chromatographic absorption, etc. So here what आपको जानने की क्या जरूरत है सबसे इम्पोर्टेंटली कि extraction and isolation are two different things. Extraction is in general when you are going to extract the plant, you're going to exhaust the plant with the various type of component, and isolation is the part where each and every component is separated from the mixture of components. See, extract के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ में, तो हम आइसोलेशन होता है जब आप पर्टिकुलरली किसी एक कंपाउंड को कंप्लीटली उस सेक्शन में से, उस एक्सट्रैक्ट में से अलग करते हो. तो एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन दो अलग अलग मैटर है, दो अलग अलग थिंग है. And when we talk about isolation, so we have to give emphasis on how from the extract of mentha you're going to isolate the menthol. This isolated menthol has a wide application in industry like pharmaceutical industry and beverages. It has also excellent biological activities such as analgesic, बहुत अच्छा पेन किलर है, antibacterial है, antifungal है, anesthetic है, as well as chemo preventive and immunomodulating action as well. Okay, इसके अलावा इसमें बहुत सारी properties हैं. हम सब बहुत सारी चीज़ों में menthol को consume करते हैं ना, पर क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसके अंदर बहुत सारी excellent biological activities पाई जाती हैं. This is about the biological source and family, and about the essential oil. An essential oil is a considered hydrophobic liquid which consists of volatile substances present in the plant. Other names of essential oil: volatile oils, ethereal oils, erythrolia, or simple oils of the plant from which they are extracted. The name of essential oil is derived from the essence because essential oil are responsible for fragrance or smell of plant from which it is derived. Plant produce essential oil for their needs. Okay, तो जो अलग अलग नाम दिए गए हैं essential oil को ethereal oils भी कहा जाता है. Simple oil like menthol from Piperita mentha. Essential oil नाम इसलिए दिया क्योंकि वो एक essence है ना, जो आप बहुत responsible है उस particular fragrance और smell के लिए. ठीक है, और ये प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने खुद के जरूरत के लिए. फाइन, ओके. एसेंशियल ऑयल आर टर्पीन्स, हाइड्रोकार्बन्स एज वेल देयर ऑक्सीडेटेड डेरिवेटिव्स सच एज अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड एंड ईस्टर. Terpenes have very complicated chemical nature. They have very complicated chemical nature. Essential oils consist of rather short sequence known as monoterpene, sesquiterpene और ring-like structures, है ना. तो लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीन रूल फॉलो करता है टर्पीन्स, और इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स लिए कहा जाता है कि डिपेंड करता है वो कैसा बना हुआ है ना. शॉर्ट सीक्वेंस है तो मोनोटर्पीन है ना. नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कैसे कंटेन कर रहा है, तो बहुत सारे मोनोटर्पीन है, सेस्क्यूटर्पीन है, डायटर्पीन, टाइटर्पीन्स, समटाइम रिम लाइक स्ट्रक्चर एज वेल. So I'm going a little bit fast because we have already discussed in earlier classes. So I'm just giving the brief about this chapter. Now coming directly to the extraction, this is what till the above part we have studied. Now giving a major emphasis on the method of extraction. So extraction is a different method by which you can extract the drug. लाइक अगर आपने मेंथा को पानी के साथ बॉईल कर रहे हो, मेंथा को आप परकुलेट कर रहे हो, मेंथा को आप स्टीम से हाइड्रो डिस्टिलेशन करो, माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन करो, ये अलग अलग टेक्निक है जिसमें आप ड्रग के अंदर का सारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर निकालोगे.
है ना, उसको सारे के सारे को आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग मेथड कर सकते हैं, और ड्रग चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्शन के लिए, है ना। इसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड है, डिकॉक्शन है, परकुलेशन है, मैसिरेशन है, सॉक्सिलेशन है ना, डाइजेशन है। ये अलग अलग मेथड्स है। और अलग अलग मेथड क्या बताते हैं, अलग अलग मेथड यही बताते हैं कि किस ड्रग के लिए कौन सा मेथड बेटर है ताकि उसका बेस्ट एक्सट्रैक्ट निकल पाए, सारी जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सॉल्युबलाइज होके उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ बाहर आए, है ना। मैं अगर सोचूं कि कोई ड्रग है जो अल्कोहल सॉल्युबल है, मैं उसको वाटर सॉल्युबल ड्रग के साथ, वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, या दूसरे सॉल्वेंट के साथ एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, तो जो मेरी ड्रग है, मेरा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ बाहर निकल के नहीं आएगा, है ना। मुझे एक पर्टिकुलर मेथड उसको देना होगा जिसके साथ में वो पहले एक ड्रग में से बाहर तो आए, क्रूड ड्रग के अंदर से बाहर तो आए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉइस क्या है। तो मेंथा के लिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स हियर इन द टेबल यू कैन सी steam distillation, hydro distillation, microwave extraction, supercritical fluid extraction, ये 3 मेथड दिए हुए हैं। ओके, सो अलग अलग कंडीशंस है, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम एक जस्ट ब्रीफ देख रहे हैं पहले, है ना। स्टीम डिस्टिलेशन कंडीशन है इसकी इंपॉर्टेंट, दैट इज 35 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और जो यील्ड वैल्यू होती है मेंथा की फ्रॉम द मेंथोल ऑयल की, वो होती है अबाउट 0.43 to 1.606%। एंड ऑयल कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, अल्फा पाइनिन, सेबिन, बेटा पाइनिन, मेर्सरीन, 3-octanol, limonene, eucalyptol, isopycnone, menthone, isomenthone, menthol, uh, pyprotone, and these are the different constants we are going to get by steam distillation. So see, दैट मीन्स जब आप ड्रग को स्टीम डिस्टिलेट करो तो इतने सारे उसमें कंटेंट निकल के आएंगे उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के अंदर। अब इन एक्सट्रैक्ट के अंदर से, इतने अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट के अंदर से आपको पर्टिकुलरली मेंथोल को आइसोलेट करना है। Fine. Another method is hydrodistillation, and hydrodistillation, the temperature is about 30 degrees Celsius and yield value is 1.77%. Fine. So menthol, you'll going to get the in the extract like menthol मिलेगा आपको, isomenthol मिलेगा, major components जो extract आपको कराएंगे। Another is microwave extraction below 70 degrees Celsius, yield value जो रहती है 0.3 to 0.6%, and here in this extract you're going to get menthone, methophyron, menthol are the major component. Supercritical fluid extraction, decrease the pressure from 400 to 200 bar, and the highest amount of yield value you're going to get from this method is 1.6 to 2.38%, and here you're going to get menthol, carbon, isomenthol, and major the component. So these are the basic method of extraction of the drug mentha peperata, and so you can see the top priority has been kept for the drug method which is easy to do, which is easy to perform. So whenever we go for the choice of extraction method, we go for what, we just look for the method which can easily be done, है ना, जो easily हो सके और जिसमें extract भी हमें मिल सके। सो स्टीम डिस्टिलेशन जो चॉइस ऑफ प्रायोरिटी मेथड रहता है, उसका हाइड्रो डिस्टिलेशन रहता है, माइक्रोवेव रहता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में सबसे ज्यादा यील्ड वैल्यू आती है, पर बहुत ही स्किल्ड काम है, क्योंकि इसमें आपको जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उसको आपको इतना कंप्रेस करना है, इतना प्रेशर इतना डिक्रीज करना है इसके अंदर कि उसका जो अबाउट फ्रॉम इट शुड बी कम इनटू द लिक्विड कंडीशन। So but the highest yield value get from this method. Okay, now moving with the other aspect of this part, steam distillation. Steam distillation is one of the major methods that are used for extraction of essential oil from the resources, because of its economic value, and it is very preferred method. Since it is very economic hai, easily ho sakta hai, we just, the choice of matter for extraction is distillation. This distillation method to be performed at low temperature, which makes a feasible separation of non-volatile substances from the substances that are not mixable in water in the need the boiling point of very discrete component. Method of steam distillation was used to extract mint oil. Okay, so steam distillation is the one of the major choice of method, और उसको लो टेम्परेचर करने की वजह ही सिर्फ ये होती है कि आपने जो टेम्परेचर देखा था,
है ना, टेम्परेचर हुआ 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर को फॉलो करने का मतलब ये है कि आपका जो कंपोनेंट है, जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, वो आपका इजीली इस टेम्परेचर पे सेपरेट हो सकता है फ्रॉम द वोलेटाइल वन, एंड दैट आर नॉन मिक्सेबल इन वाटर अंडरनीथ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरी डिस्क्रीट कंपोनेंट। और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो आपका सब्सटेंस दैट आर नॉट मिक्सेबल इन वाटर, तो ये आपके इस टेम्परेचर के ऊपर आके आसानी से सेपरेट आउट हो सकते हैं, इसलिए इसकी चॉइस में ये जाता है कि टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अनदर मेथड इज hydrodistillation. Hydrodistillation is the most important method used for the restoration of essential oil. The herb material is kept in still and steam is used directly for heating. On the other hand, it can be soaked in warm water, or a perforated plate is used for the placement of the herb material from the above the lowest part of the still, that is the partial filled with water and then heated. After this, the finally obtained vapor mixture goes through the condenser and the condensate is deposited in the fluorine flask where the water and the essential oils are separated from each other. This water can be sent back to the still and in some cases used as pregnant water. This is hydrodistillation method. Another is microwave extraction method. माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन मेथड इज बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है, और उसमें जो जिस वजह से सेपरेशन होता है उसकी वजह है कि डायपोल रोटेशन और आयनिक कंडक्शन जो होता है, ये टू मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर द हीट जनरेशन जो माइक्रोवेव में होता है। दैट इज डायपोल, जो भी हम माइक्रोवेव में जो भी चीज़ गर्म हो जाती है उसकी वजह होती है कि इसके अंदर डायपोल रोटेशन है और आयनिक कंडक्शन है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। एंड ऑन दिस द टेक्निक, ये पूरा माइक्रोवेव की टेक्निक इसी दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। while it output or its efficiency is dependent on the dielectric properties of the herb material, और उसका जो आउटपुट होगा वो dielectric properties कैसी है आपकी मटेरियल की, उस पर डिपेंड करता है। This extraction came into process when the water present in the internally in the plant absorb energy. ये तब हो पाता है जो वाटर वो ड्रग में जो प्रेजेंट है। सपोज इन केस ऑफ मेंथा, अगर हम मेंथा को माइक्रोवेव से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेंथा के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो पहले इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, and this absorbance became a cause of enhancement in the pressure inside the plant material, which becomes a reason for cell structure to break, and solvent is then allowed to penetrate into the cell matrix, and this is how the extraction has been done. So this was about the other methods, that is I'm not going into the supercritical fluid method, that is a little detailed part in the extraction part, we'll go to discuss this later. The major part जो हम जिसके ऊपर हमें फोकस करना है कि सबसे पहले कि मेंथा को एक्सट्रैक्ट करना है ना। तो मेंथा को एक्सट्रैक्ट करने के तीन तरीके हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, हाइड्रो डिस्टिलेशन, सॉरी चार, steam distillation, hydro distillation, microwave extraction, and third is supercritical fluid extraction. Now coming to the method of isolation of menthol. Okay, method of isolation of menthol is the one of the very crucial step, because you have to take care very much about the temperature, about the process by which you can prevent the loss during the volatile during the collection time, है ना। बहुत वोलेटाइल होता है, हम जितने भी ड्रग को क्लेवेंजर अपरेटस लगा के स्टीम जब हाइड्रो डिस्टिलेशन करते हैं, तो हाइड्रो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हमें बहुत मेक श्योर करना पड़ता है कि जब वो वेपर रही है वो कंडेंस होकर आने के बाद आपका जो लॉस ना हो। सिंस मेंथा के अंदर जो मेंथॉल है वो भी 0.1% है, तो आपको बहुत 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 प्रिसिशन चाहिए, बहुत वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी नो लॉस। Okay, now isolation part, that is the extraction, but when we talk about isolation, so fractional distillation chromatographic absorption method can be used to isolate menthol from extracted essential oil of mint, है ना। Note this sentence very importantly, that fractional distillation and chromatographic absorption method used to isolate menthol from extracted essential oil of mint. तो हमें जितना भी अभी इनिशियल जितने मेथड से, चाहे स्टीम डिस्टिलेशन से, हाइड्रो डिस्टिलेशन से, या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड से, या माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन मेथड से जो भी मिला वो हमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल ऑयल ऑफ मिंट मिला है। मिंट का एसेंशियल ऑयल है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट आएंगे। अब उसको सेपरेट आउट करना, आइसोलेट करना कैन बी डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड chromatographic method. So today I'll be giving you just a brief about fractional distillation, and the next class we're going to discuss about the in depth about the fractional distillation chromatographic method.
Ordinarily, 60 to 85% of menthol with 12% to 20% menthol is present in Mentha arnavus essential oil. But there is a drawback of presence of these two compounds, which are separated from the oil by evaporating using a rota of vapor with a heating bath set at 66 degrees Celsius and RPM of 55. Rotation per minute is 55. When a mixture of two solvent ethanol and hexane was used, the yield of extracted components such as methone, methylphenol and menthol will rise up. Okay, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक एक फ्रैक्शनल पार्ट में एक एक टेम्परेचर पे एक एक पर्टिकुलरली स्पेस पे एक एक कंपाउंड सेपरेट आउट होता है ना. तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो सेपरेशन का टेम्परेचर है जो आरपीएम पे वो सेपरेट होने वाला है उसको बहुत कीनली यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू हैव टू मेंटेन दैट and then you can separate out. So this was all about for today's class, and we'll be going into deep depth about how fractional distillator works and how when you extracted the menthol oil, जब आपने menthol oil को extract कर लिया completely, तो उसके बाद जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तब उसमें वो कैसे एक एक पर्टिकुलरली ऑयल का सेपरेशन होता है हीटिंग बाथ के ऊपर 66 डिग्री टेम्परेचर और 55 आरपीएम जब मेंटेन की जाती है उसके बाद जो सेपरेशन होता है वो कैसे होगा. ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे एंड विल बी कंटिन्यू दिस पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.